Namaskar all the students. Today I am going to teach the next topic in the chapter number 2, that is solution. The Raoult's law for the non-volatile solid in a liquid solution. In the last video already discussed the Raoult's law for the liquid solutions and the both solute and solvent in which they are present in a volatile state. Now liquid and both are volatile. But in this law, in this topic, the solid in a liquids and the solid is the non-volatile solute and the liquid is a volatile solvent. जब हम राउल्स लॉ के इस एग्जांपल को देखते हैं तो उससे ये किस तरह से इफेक्ट करता है कि सॉलिड इन अगर जो सॉल्यूट है वो अगर नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर के उसके बीच में क्या रिलेशन रहेगा और क्यों वेपर प्रेशर पे इफेक्ट आएगा। हमने एग्जांपल देखा था क्लोज्ड वेसल में, हमने क्लोज्ड वेसल जार में हमने एक बीकर लिया और बीकर के अंदर हमने सॉल्वेंट पार्टिकल्स देखे इन द लास्ट वीडियो और हमने देखा उसमें टेम्परेचर दिया तो उस कंडीशन में उस क्लोज्ड वेसल में क्या हुआ, वो जो लिक्विड पार्टिकल्स थे, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स, दे आर कन्वर्टेड इनटू the vapor and the vapor pressure exerted by the vapors and at equilibrium this pressure is vapor pressure और वहां पे वो vapor pressure किस पे डिपेंड कर रहा था, प्योर कंपोनेंट पे, या ये कहें कि दोनों कंडीशन दोनों पे, because both are the volatile but in this topic the one is the non volatile and one is volatile. तो वेपर प्रेशर किस पे ज्यादा होगा, अगर हम प्योर सॉल्वेंट ले एक जार में तो एक बीकर में हमने लिया प्योर सॉल्वेंट सिर्फ और वो कैसा है आपका वॉलेटाइल, और दूसरे में हमने लिया सॉलिड इन अ लिक्विड। जब सॉलिड इन अ लिक्विड लिया तो उसमें और उसमें किसका ज्यादा होगा, सॉल्वेंट में, बिकॉज सॉलिड जब हम बात करते हैं सॉल्वेंट की तो सॉल्वेंट कैसा है, वॉलेटाइल, तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। बट जब हम सॉलिड इन अ लिक्विड की बात करें तो सॉलिड हमारा जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स कैसे हैं, हमारे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो नॉन वोलेटाइल है, तो वो सरफेस एरिया को कवर अप करेंगे जिसकी वजह से जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से प्योर कंडीशन में प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कंपैरिजन टू solute plus solvent. Now for these type of solutions the Raoult's gives the law, that is Raoult's law states, उसने एक स्टेटमेंट दिया, at a given temperature the vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of the solvent. कहने का मतलब है यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो है वेपर प्रेशर वो किसके इक्वल आएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। नाउ दैट इज वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। नाउ इसमें जब हम बात करते हैं P is directly proportional to XA, that is mole fraction of component A. A is the solvent and B is the solute and C is the solution. तो जो भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, B पे, क्योंकि B का कोई रोल नहीं है वहां पे। सो P equals to P naught A XA फ्रॉम द लास्ट टॉपिक, यहाँ वहां हमने देखा था P equals to P naught A, partial vapor pressure is equals to the vapor pressure of pure component, that is A, and its mole fraction. Now that is P is the P for the solution, P naught A for pure solvent and XA for the mole fraction of the solvent. यहाँ पे B का कोई रोल नहीं है क्योंकि उसकी वजह से वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन नहीं होगा। Now rearranging this equation and the P upon P naught A equals to XA. Now subtracting the each equation, each side from the one. Now we have 1 minus P upon P naught A and equals to 1 minus XA. We know that the XA plus XB equals to 1. Now we rearrange, then we get 1 minus XA equals to XB. Now put the value here and we get the P naught A minus P upon P naught A equals to XB. Here that is the vapor pressure of pure component A and P is the total vapor pressure of the solution
here also the partial vapor pressure of pure component A equals to mole fraction of B. From this equation we can calculate some values and we can solve the questions related from the Raoult's law. Now the P naught A minus P equals to the lowering in vapor pressure on the formation of solution, while the P naught A minus P upon P naught A equals to relative lowering in a vapor pressure. Now in this topic we will compare the both law, that is the Raoult's law and the Henry law. We already discussed in the Henry law that the partial vapor pressure, that is vapor pressure, that is pressure is directly proportional to the mole fractions of the gas. And in the Raoult's law, the partial vapor pressure is directly proportional to the mole fraction, vapor pressure of pure component and its mole fraction. In this, according to Raoult's law, that is PA equals to P naught A XA, and according to Henry's law, that is a P equals to KH XG. We know that in this equation, in both law, that is the one common thing is this, that is a P naught A and the KH is equal according to both if we compare the equations. And the KH और P naught A क्या होनी चाहिए, दूसरे के equal होनी चाहिए from this equations, because दोनों ही conditions में प्रेशर्स और मोल फ्रैक्शंस के बीच में रिलेशंस आ रहा है. तो दोनों ही लॉ में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या किस चीज को बताता है वो हम इसमें सिमिलैरिटीज देख रहे हैं. बोथ लॉ अप्लाई टू वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन. जब हम दोनों लॉज को पढ़ते हैं तो हमने क्या देखा कि दोनों ही लॉ किस पे अप्लाई हो रहे हैं, फॉर द वोलेटाइल कंपोनेंट. जब हम इसकी बात करते हैं तो ये किसके लिए निकाली हमने इक्वेशंस, वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए. Both law states the vapor pressure of one component, that is one component is directly proportional to the mole fraction of that component. जो भी हमारा component है, यानी जो भी vapor pressure है उस component की जो भी vapor pressure जो भी उस component की वजह से आ रहा है वो directly proportional होगा mole fraction. जितने ज्यादा mole fractions होंगे उस component के उतना ही vapor pressure formation होगा. Now the third point is Raoult's law defined the proportionality constant as vapor pressure of the pure component. किसको बताता है? Pure component के vapor pressure को बताता है उसकी proportionality constant. जबकि while the Henry law defines the proportionality constant as some experimentally determined value. जबकि जो Henry law में जो हम KH की जब बात करते हैं तो वो किसको बताता है? Experimentally determined value को. Now today's homework is the question number 1 is state and explain the Raoult's law and give its mathematical expression. And the question number 2 is why is the vapor pressure of an aqueous solution of glucose lower than that of the pure